Whenever we have a community that is the intended target of a social change, we always run the risk of imposing values that are alien to these communities. And this risk is particularly high when the target community comprises of marginalized and voiceless persons, and the educator is acting on behalf of the more powerful and richer community, as is usually the case with development assistance projects. Most women of the world obtain much less education and earn much less money than men. Women are much less represented than men at political and managerial levels. The Millennium Development Goal 3 tackles gender inequality and promotes the empowerment of women. Global data shows that the poorer the country, the higher the gender inequality. In the world today, 2 out of every 3 illiterate persons are women. Gender equality is a determining factor of development. What is needed is to create a virtuous circle of empowered women who pave the way for stronger and healthier families, which set the stage for more prosperous and just societies. एक चीज़ तो मेरे दिमाग में मैं सबके सामने करी, मुझे मेरे दिमाग में ये जरूर थी कि मैं कुछ करूं, मैं करना चाहती थी, लेकिन मेरी जब शादी हो गई थी तो मैं कुछ नहीं कर पाई। Biggest challenges that we all faced at that point of time was that the men were very suspicious. They did not want the women to get out of their homes, they did not want the women to work, they did not want the women to earn. So there was tremendous resistance from the men. There was tremendous resistance from the men, but to the credit of the women, they all ganged up and they said that no, we want to do this. We have to do this, we want to do this, and we're going to go ahead. Going to the villages, meeting the people, I realized that the most important thing is that the women here are completely marginalized and have backbreaking jobs, working from dawn to dusk in unproductive fields, going to the forest to chop fuel, to gather fodder for the animals, and basically because of the fact that they're doing so, knowingly, unknowingly destroying the environment. So what became quite important then was to have a structured organization which would then take on the job of providing an alternative to these women and to be able to give them empowerment not just in economic terms but also in social terms. मैंने शायद इतने गांव नहीं देखे थे जो गांव मैंने आज देख चुकी हूँ, और कैसे, और मैंने ये रास्ता ऐसे तय किया है कि मैं सोचती हूँ ऐसा तय कोई औरत नहीं कर पाएगी। धूप में भी गई हूँ मैं, बारिश में भी गई हूँ, बर्फ भी पड़ी होगी, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे गांव बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल एकदम नीचे डाउन भी है, एकदम ऐसा भी है। कहीं पे पहले औरतें नहीं आई, दिक्कत आई, उनको समझाना पड़ा कि ऐसा करो, तो वो औरतें पास आई। उसके बाद जब दूसरे गांव में जाओ, पहले दूसरे गांव में जाने में हिचक तो होती है कि एकदम से, मैं भी इतनी गांव में नहीं गई, मैंने अपना ही मायके का पूरा गाँव नहीं देखा था। तो इस संस्था में जुड़ने के बाद मैंने हर गांव देख दिया, हर गदेरे देख दिए, हर वो देख दिया मैंने। So in 89 I made the Jan Jagran Samiti, which is a registered non-profit organization with 7 people on board, all of whom are local people from the villages. And then we started looking for ways and means to try and do something for the development of this area, which, as I said, would ease off the pressure on the forest and also empower the women. And initially it was a big struggle because I had no funds and it was quite a nightmare, but nevertheless I did manage to get enough money to be able to collect women in a tribal area called Munshiari, where traditionally they used to spin and weave pashminas, because the Bhotia people from Munshiari used to go to Tibet in trans-Himalayan trade till 65, till the Chinese took Tibet over. So initially, as an experiment to see how the market would respond, how economically viable it would be, we set up centers in Munshiari and got the women over there organized into producer groups. And I used to go and have exhibitions in Delhi and in Europe. मैडम और भूमि जी दोनों हमारे गांव आए, हम लोगों की मीटिंग ली कि हम आपके गांव में कोई काम खोलना चाहते हैं,
अच्छा है, हम सीखना चाहते हैं काम। तो हमने फिर इन्होंने हमारे गांव में मशीन लगवाई, छोटे छोटे रूम बना के हमको एक मास्टर व्यूअर दिया सीखने के लिए। और उसके बाद फिर हम कुछ सीख लिए, कुछ कपड़ा बनाने लगे, शॉल वॉल बनाने लगे। फिर बीच बीच में हमको देखने आया करते थे कि काम अच्छा कर रही है महिलाएं, मन लगा के काम कर रही हैं, सीख रही हैं, कुछ बना रही हैं। तो फिर हमको एक बड़ा सेंटर दिया मटेरी गाँव में। वहाँ हमारे एक हॉल में बड़ी बड़ी लूमें लगवाई, सबके लिए अपनी अपनी लूमें लगवाई। फिर हमारे तनख्वाहें भी बढ़ी। तो फिर हम अच्छा काम करने लगे, शॉल वॉल बनाने लगे। तो मैडम हमारे काम से खुश हो गई। हम लोगों का हौसला बढ़ गया। पहले हमको विश्वास नहीं था कि ये काम इतनी बड़ी फैक्ट्री बनेगी और हम लोग इतने सालों तक काम करेंगे और हमारा इतना बड़ा हमारे साथ इतने लोग जुड़ेंगे करके। तो 12 महिलाएं, 12 दूनी 24 हो गए। ऐसे करके हम लोगों ने ये काम शुरू किया। One of the offshoots was, of course, that the women had these small children and they didn't know what to do with them during the training programs, which were normally 5 hours or 6 hours every day. So we started creches for the women's children, and the creches morphed into primary schools. The primary schools morphed into higher secondary schools, and then into an intermediate college for girls. There was also the healthcare problem for women, and so we started a small clinic, again with the support of the Danny K Foundation, started a small clinic on the roadside and had a gynecologist, a lady, who took care of the gynae problems of the women and also trained up some of the local educated women as paramedical workers, village health workers. And then Panchachuli slowly became self-sufficient. So then we decided to make production centers instead of having small units in the villages and make it more professional. And so we made one big production unit with 300 odd women in the industrial estate near Almora, and then several other smaller production units in the villages. And then the products became better and better, more and more sophisticated. हमारा ऐसा भी नहीं है कि बहुत अमीर इलाका भी नहीं है, गरीब इलाका है, जिससे वो औरतें उनके हर घर के चूल्हे जल रहे हैं और अच्छे बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में एडमिट कर रखा बच्चों को, अच्छा उनको शिक्षा दे रहे हैं। हर किसी औरत को इस संस्था में जुड़ने से फायदा ही हुआ है, नुकसान किसी को नहीं हुआ है। और आदमी पे दबाव में औरतें काम करती थी या आदमी कभी शराब पी के आए तो उसकी भी सुननी पड़ती थी, लेकिन आज वही आदमी भी कुछ सुधर गया है कि भैया देखो मेरी औरत कमा के ला रही है तो मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो औरत राशि कुछ तो कह सकती है, इसमें औरतों का मतलब काफ़ी योगदान है। आज देखिए कि धीरे धीरे मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि 3 औरतों से मैंने काम किया कि आज इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी, और आज देखिए देखते देखते इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। With Panchachuli, I'm so happy that now the whole team is just doing everything. The day-to-day work is being done totally by them, and I'm just like a mentor now to the Panchachuli family, and it's nice to be able to, because after all one can't keep sticking to one chair and position. You know, there's a certain time when one has to let go and let the second and the third line of leadership evolve and develop. इस काम करने में बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी भी है कि मैंने ये काम कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और आज पीछे मुड़ के देखते मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने ये किया। और अब मैं अगर छोड़ दूँ या मर जाऊँ तो मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ किया, कोई मेरी जुबान में ये बात होती है।